Good morning everyone. So today we'll be discussing the public facilities. ठीक है, अब कुछ फैसिलिटीज जो हैं that are provided to you by your government. So I've said you in the previous class also that कुछ चीजें होती हैं, कुछ investments होती हैं which are required to convert a human resource to human capital. So imagine, why would anybody spend their personal money for national development? I know development of a nation is in a way your development, but nobody personally would make the investments. Okay, so for that, what our government has done is, our government has taken up the charge that, okay, the government owns up to these things, and we are going to make investment, we are going to convert the mass into class. Okay, we are going to convert the human resource to human capital. So for that, your first investment that is required is पब्लिक फैसिलिटीज. कुछ पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ लेट अस सी how is it that average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind their crucial areas? The reason is, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. So income be itself a complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines, unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community make preventive steps. So, this is a very nice time to understand this topic. Like, money in your pocket, जितनी भी आपके पास पैसे हैं या आपके पास घर में या बैंक में जितनी भी पैसे हैं, that cannot buy you certain things that your community can provide. ठीक है, जैसे now during this pandemic, they are richest of the people who are suffering from COVID. Okay, like your Mr. Bachchan, your Amitabh Bachchan, he has lots of money. Could he escape from the COVID-19? Could he escape from Corona? No, he could not. In fact, his entire family was affected by it. So there are some situations or some diseases that can be prevented only when there is the help of the community. When everybody is helping you in your community, when everybody is taking precautionary efforts, when everybody is aware about it, then only there are certain things that can be prevented. Like your pollution-free environment. You not riding bike or you not driving car won't make the air pollution free. Okay, so you need to you need to generate, or you need to spread this awareness in your society where not only you but your entire community is working on it. Okay, so everybody needs to work on certain things that are of the community interest. Okay. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? So imagine there are certain things that if they are provided as community as whole, that will be cheaper and of more benefit. सो जस्ट इमेजिन, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड आप पूरे लोकेलिटी के लिए रखते हैं और उसकी मंथली पेमेंट जो है वो 10,000 रुपीज है, वो पूरी सिक्योरिटी को गार्ड करता है. सो इफ देयर आर 10 हाउसेज इन योर लोकेलिटी, सारे हाउसेज को कितनी पे करने पड़ेंगे? 1,000 रुपीज. Okay, so that will be only 1,000 rupees. But imagine if you are appointing वन सिक्योरिटी गार्ड फॉर अ हाउस. अलग अलग हाउसेस के लिए इंडिविजुअली जब आप सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करते हैं
तो पर हाउस एक एक सिक्योरिटी गार्ड होंगे, दैट मीन्स 10,000 ईच हाउस. सो अर्लियर अगर आपके पास एक कम्युनिटी सिक्योरिटी गार्ड थी, आपको 1,000 देना पड़ता था, अब आपको 10,000 देनी पड़ रही है. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली योर एक्सपेंडिचर हैज 9,000 has been added to your expenditure. So there are certain things that are more helpful, more effectively when the community is kept in consideration. Now, what if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open the schools and provide other facilities so that all the children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facilities. So what happens? So just imagine today you are studying not because your parents are aware. Obviously your parents are aware, that's why you are coming to the school. But you know, one more reason for this is that your locality is aware about education. So you would be the only child in school. Do you think our teacher would come only to teach you? You can take private tuition classes like this, but you cannot imagine a school with a teacher and a student. So you are studying today because your locality is aware about education. So you, and apart from that, it's of the lesser price also. Okay, so there are many things that our government provides because our public, our locality, our country is interested in those services. Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, the public distribution system (PDS) functions well. Health and nutrition status of people of such state is certainly likely to be better. So now what happens? So in Kerala, why less kids they die? क्यों कम बच्चों की डेथ होती है? Because you know, people out there, they are more aware. The government has spent more on their health care. ठीक है, इसलिए उन जगहों के जो डेथ रेट्स हैं वो कम हैं. दे आर वेरी वेरी लेस. कुछ जगहों में लोग बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि वहां पे पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपके राशन शॉप्स हैं, वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं. सो पीपल हैव दे गेट न्यूट्रिशियस फूड टू ईट. इसलिए वहां के कुछ जहाँ पे पीडीएस सिस्टम एक्टिव है वहाँ हेल्थ केयर भी अच्छी है बिकॉज लोग अच्छा खाना खा रहे हैं. Isn't it surprised that small countries in our neighborhood, Sri Lanka, is ahead of India every respect, and a big country like ours has such low rank in the world? Table 1.6 also shows that though Nepal has less than half of the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy level. Many improvements have been suggested in calculating HDI, that is Human Development Index, and many new components have been added to human development reports. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important is development, is what happening to the citizens of the country. It is people, their health, their well-being that is more important. Do you think there are certain other aspects that could be considered in measuring human development? So now what happens? So if you see this table, अगर आप ये table 1.6 देखते हैं, let us see the first column in which countries' names are given: Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Nepal, and Bangladesh. Second is your gross national income. GNI is given. Okay, that means national income kitni hai. So it's 9,250 of Sri Lanka, 5,150 of India, 3,998 of Myanmar, 4,652 of Pakistan, 2,194 Nepal, and 2,713 of Bangladesh. Now if you see life expectancy at birth, जब किसी बच्चे की जन्म होती है तो वो एवरेज कितने सालों तक जिंदा रहेगा, उसकी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है. See,
Of Sri Lanka, it is 74.3, India 66.4, Myanmar 65.2, Pakistan 66.6, Nepal 68.4, and Bangladesh 70.7. Literacy rate for 15 plus year population. Literacy rate एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद 15 ईयर्स के बाद प्राइमरी एजुकेशन मिलने के 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बाद की लिटरेसी 91.2 श्रीलंका, 62.8 इंडिया, 92.7 म्यांमार, 54.9 पाकिस्तान, 57.4 नेपाल एंड 57.7 बांग्लादेश. HDI रैंक इन द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक. अब रैंक्स कैसे हैं, ठीक है. 73 श्रीलंका, 135 इंडिया, 150 म्यांमार, पाकिस्तान 150 Myanmar, 146 Pakistan, 145 Nepal, and Bangladesh 142. Now let us go to the paragraph that we were dealing. So here clearly it is given that isn't it surprising that Sri Lanka being such an island country, इतनी छोटी सी कंट्री होके अगर आप देखेंगे तो कितना वो compete कर रहा है, ठीक है. इनफैक्ट बहुत चीजों में इंडिया से अहेड है श्रीलंका. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंडिया इज श्रीलंका इज अहेड इंडिया. इंडिया हैज गॉट मोर पॉपुलेशन, मोर टैक्स पेयर्स, ठीक है, ज्यादा अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, बट स्टिल श्रीलंका इज एबल टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट नेपाल, अगैन नेपाल ऑलमोस्ट अ वेरी नेग्लिजिबल कंट्री ऑन द मैप, स्टिल इट इज कंपीटिंग विथ इंडिया, ठीक है. लिटरेसी रेट में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो इंडिया से ज्यादा है, ठीक है, सॉरी इंडिया से बहुत पीछे नहीं है, इट्स वेरी क्लोज टू इंडिया. सो what is important is development, what is happening to the citizen of the country. एक कंट्री कितनी मिसाइल्स खरीद रही है, एक कंट्री कितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो डिपेंड नहीं करता. Rather, what is your human development index? That people, citizen of a country, वो कितने benefited हैं, ठीक है, उन्हें कितनी benefits मिल रही हैं, वो कितने ज्यादा country के इनकम में ऐड कर पा रहे हैं. दैट मीन्स क्या उनकी कैटेगरी टैक्स पेयर्स की है, क्या वो टैक्स पे करके कंट्री के इनकम में एडिशन कुछ कर पा रहे हैं या नहीं. सो दिस इज व्हाट is in the real sense is the meaning of development. आप मिसाइल्स खरीद ले रहे हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर ले रहे हैं, आप 5 रफाल ले आ रहे हैं, इट्स नॉट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज व्हेन nobody goes hungry to the bed. Mahatma Gandhi once said that for me 15th August 1947 is not the day of independence. आज मैं 15th August 1947 को इंडिपेंडेंस डे नहीं मानता हूँ. For me the day when no poor will go hungry to the bed will be the real day of independence. ठीक है, वो बहुत ही क्लियरली बोलते थे महात्मा गांधी दैट मेरे लिए उसी दिन इंडिपेंडेंस होगा जब सारे लोग खाना खा के बेड पे जाएंगे. दैट मीन्स एवरीबडी विल हैव एम्पल टू सेटिस्फाई देयर हंगर. Okay, so just going through the development does not mean buying new techniques and investing in something or in imaginary projects. Okay, the real development, the real essence of development is when your citizens are actually developed. So what do these other countries they do is the other countries they focus more on development of their people than development of their country. ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं that the development of the people are the development of people and development of country is correlated. अगर लोग develop करेंगे automatically country भी develop करेगी. Now let us read sustainability of development. Suppose for the present that a particular country is quite developed. We would certainly like the level of development to go up further or at least to maintain for future generation. This is obviously desirable. So imagine अगर कोई country जो है वो developed है, that means it is on a path of development, developed countries के रेस में है. So what would you think कि जिस पेस से डेवलपमेंट हो रही है उसी पेस से डेवलपमेंट होती रहे और फ्यूचर जो हमारी जनरेशंस आए वो भी कंट्री की डेवलपमेंट देख पाए.
ठीक है, ऐसा तो नहीं इमेजिन करेंगे कि आज हमारी कंट्री डेवलप्ड है और कल हमारी कंट्री डेवलपिंग हो जाए और फ्यूचर में अंडर डेवलप्ड हो जाए. नोबडी डिमांड्स दैट और नोबडी डिजायर्स फॉर इट. एवरीबडी डिजायर्स दैट द थिंग्स शुड गो और थिंग्स शुड बिकम बेटर इन फ्यूचर. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type, the levels of development are not sustainable. So, the scientists are continuously telling that the way we are developing, the things we might ruin the development. ये जो हमारी development है वो sustainable नहीं है, वो long living नहीं है. ठीक है, अभी भले ही वो development दिख रही है, but maybe in future it might bring destruction. Now, groundwater is an example of renewable resource. These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may not be overused. For example, in case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing the resource. So imagine कुछ रिसोर्सेज जैसे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वाटर, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो सॉइल फर्टिलिटी, ये सब रिन्यू हो जाता है. नेचर जो है वो खुद ही अपने रिसोर्सेज को वापस रीस्टोर कर लेती है. ठीक है, यू कैन से फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई गिव यू अ कॉमन एग्जांपल कि रिचार्ज कर लेती है. ठीक है, जैसे आपके मोबाइल फोन्स चार्ज होते हैं, अगर आप एक्सेसिवली यूज करने लगेंगे तो आपके चार्जर की एक लिमिट होती है कि उतने ही टाइम में वो उतना चार्ज कर सकता है. जैसे 2 आवर्स में 3 आवर्स में वो फुल चार्ज कर देगा. लेकिन अगर आप चार्ज में लगा के और आप गेम खेले जा रहे हैं, its capacity might reduce or it might take a longer time to रिचार्ज. ठीक है, अब इसका ग्राउंड वाटर से अगर आप रिलेट करके देखें तो सपोज समझिए कि 10,000 लीटर्स अगर आपकी रेन वाटर से रीस्टोर कर रहा है ग्राउंड. ठीक है, रेन से वापस धरती में 10,000 लीटर जा रहा है और हम 15,000 लीटर स्पेंड करने लगे. ठीक है, या फिर 10,000 अगर 20,000 हम स्पेंड करने लगे, डबल हम लोग यूज कर रहे हैं. सो वो जो गैप है 10,000 लीटर का, दैट विल लीड टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. व्हाई? बिकॉज वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्स. Now, non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on Earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. Now, new sources in this way add to the stock. However, over times, even this will get exhausted. So, your non-renewable resources, कौन से resources होते हैं? ऐसे resources जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे. They might get exhausted. So, for that, what we have to do is either we have to look for an alternative way of using renewable resources. जैसे अब हमारे solar panels आ गए हैं, solar chargers आ गए हैं. ठीक है, हमारा sun खत्म नहीं हो रहा है. Instead of using electricity, what do we do is we have started using this solar. Okay, हमारे ग्राउंड वाटर को वापस और ज्यादा तरीके से गेन कराने के लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज की है. सो वी हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव वे हाउ वी कैन यूज आवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो एक फिक्स स्टॉक में है अर्थ पे. ठीक है, और एक समय के बाद दे माइट गेट एग्जॉस्टेड. ऐसा नहीं है कि आज है और कल फिर बारिश हुई और कोल आ गई. ठीक है, फिर बारिश हुई गोल्ड आ गई, फिर बारिश हुई बॉक्साइट आ गया. ऐसा नहीं होता है. दे हैव गॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन अर्थ. Consequence of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. So अगर हम environment को अगर हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं, सो इट इज नॉट दैट अगर हम इंडिया में डिग्रेड करें तो वो केवल इंडिया को इफेक्ट करेगा. द एनवायरमेंट हैज गॉट नो बाउंड्रीज. दिस बाउंड्रीज आर क्रिएटेड बाय वी पीपल, नॉट बाय द नेचर. अगर फ्लड आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर में, then that will affect all the countries through which the Brahmaputra river flows. Okay, so the destruction, the environmental degradation are not limited to the boundaries.
or further is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, or other social scientists are working together. So they are some of the area where all the countries, scientists, environmentalists, philosophers, they all have come together and they are working for the development, or you can say for the betterment of environment. They are working how to reduce the environmental degradation, not thinking about only their country, but by thinking about world as whole. In general, the question of development or progress is perennial. At all times at all times as a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, where we wish to become, what we wish to become, and what are our goals. So the debate on the development continues. So, continuously we have to, this is such a topic that will flow or that will go on फॉर एवर एंड एवर. ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ हमारे जो बचपन में डेवलपमेंटल गोल्स थे अच्छी एजुकेशन की, अगर हम अच्छी एजुकेशन रिसीव कर लेते हैं तो हमारी डेवलपमेंटल गोल खत्म नहीं होती है. इट्स अ मूविंग टॉपिक. जब आप अच्छे एजुकेशन रिसीव कर लेते हैं उस वक्त आपकी गोल हो जाती है गुड अर्निंग. जब आपकी गुड अर्निंग हो जाती है फिर आप सोचते हो कि नहीं अब हमें इंडिया में नहीं, अब हमें अब्रॉड जाना चाहिए. सो इट्स अ मूविंग गोल. सो डिबेट ऑन डेवलपमेंट विल कंटिन्यू फॉर टिल यू आर अलाइव. हमेशा आपकी डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो वैरी करते रहेंगी हर एज में, और हमेशा आपकी डेवलपमेंटल गोल्स चलती रहेंगी. इट्स एन अनएंडिंग टॉपिक. सो व्हाट नाउ यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स एज योर होमवर्क. थैंक यू.